नमस्कार दोस्तों। आज हमारा यहाँ पे लद्दाख में जो यात्रा का अंतिम दिन है और सुबह सुबह हम आज लेह में थोड़ा मार्केटिंग करेंगे और फिर ऐसे कुछ सज्जनों से मिलेंगे जिन्होंने न कि हिंदुस्तान बल्कि पूरे विश्व को एक मॉडल दिया है कि क्लाइमेटिक चेंज पे क्या चिंतन होना चाहिए और किस तरह से हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। यहाँ पर मेरी मुलाकात होने वाली है आज नॉर्फेल, जो कि बहुत ही जाने माने एक पहले इरिगेशन डिपार्टमेंट के इंजीनियर हुआ करते थे, लेकिन आज वो रिटायरमेंट के बाद जब वो गांव आए तो उनकी मैंने आज से लगभग 20 साल पहले एक नेचर मैगज़ीन में एक लेख छपा था। बंगाल के कोई लेडीज़ थी पत्रकार, उनके माध्यम से, कि व्हेन नॉर्फेल केम बैक टू लद्दाख लेह ही फेल्ट वेरी सैड कि उनकी जो गांव की जो खेत हैं, जो उनके अनाज हैं, जो गेहूं हुआ करते थे, वो बिल्कुल एकदम सूखा ड्राई बिना पानी के सब समाप्त हो गया। तो 24, 25, 30 साल नौकरी करने के बाद जब वो इंजीनियर, तो उसके दिमाग में चिंता हुई कि कैसे मैं अपने गांव के इन खेतों को, क्योंकि जैसे कि हमने देखा है कि यहाँ जितने भी खेत हैं वो सारे जो है वैलीज़ के अलोंग हैं, और वैलीज़ में भी उन वैलीज़ में जहाँ ऊपर ग्लेशियर है और नीचे थोड़ा सा जब वो ग्लेशियर आउटलेट आउटवाश प्लेन में आता है तो उन जगहों पे यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने भी यहाँ पे मॉन्क्स हैं या पुराने जो भी इनके धर्म गुरु रहे हैं, उन्होंने भी उन्हीं घाटियों पे जाके अपने ये बड़े बड़े जो स्तूपा, ये जितने भी उन्होंने बनाए हैं तो वो उन्हीं गांव वालों को एकत्रित करके अपने सराउंडिंग्स में ऐसे करके उन्होंने अपने धर्मस्थल डेवलप किए हैं। लेकिन एक बड़ी सोचनीय बात जो नॉर्फेल की थी वो ये थी कि भाई आफ्टर ऑल 30 साल बाद जब मैं गांव आया तो गांव की जो हरी भरी खेत थे, जैसे कि हमारे उत्तराखंड में, तो लोगों ने छोड़ ही दिया है, लेकिन यहाँ मजबूरी थी कि यहाँ पानी नहीं था। फिर उन्होंने अपना दिमाग लड़ाया और उस वैलीज़ में अप स्ट्रीम में छोटे छोटे 4 पौंड बनाए। दीवाल खुद गांव वालों को बोला कि चलिए बंद बनाते हैं, और बड़े तालाब जैसे बनाए, और जैसे 4 तालाब बनाए तो एक तालाब का छोटा सा आउटलेट दूसरे तालाब को और दूसरे का आउटलेट तीसरे तालाब को। तो पानी तो रहता है। समर में भी आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि वाटर जो है धीरे धीरे करके, जो आइस मेल्ट है मोरेन्स के नीचे से, वो धीरे धीरे रिस के आता है, लेकिन वो पानी इतने बड़े प्लेन के लिए, जो यहाँ का लद्दाख का जो ये वाला डिजर्टिक एरिया है, उसके लिए बिल्कुल नगण्य है। और जब हम देखते हैं तो उस पानी को उनने देखा कि जो पानी तो आ रहा है ठीक है, लेकिन विंटर में जैसे ही स्नोफॉल होता है, क्योंकि यहाँ स्नो बहुत होती है, तो वो जितने पॉन्ड्स थे सारे पैक हो गए। वो पैक हो गए तो कम से कम उनको लगा कि कम से कम अगर हमारे 4 बड़े बड़े पॉन्ड वैली में पानी के बने रहेंगे तो वो उन पॉन्ड्स को धीरे धीरे करके पानी जो है उसके आउटलेट के रूप में बाहर आएगा, और धीरे धीरे वो पानी साल भर हमको खेती के लिए, कम से कम 4-6 महीने जो इनकी खेती है उसके लिए पानी सफिशेंट। तो ये थी कहानी नॉर्फेल साहब की, जिनसे मैं मुलाकात करने जा रहा हूँ, और उन्हीं के ही शागिर्द, उन्हीं का ही संरक्षण में आपने सुना होगा आजकल एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्वायरमेंटलिस्ट हैं यहाँ के, और सोनम वांगचुक। तो सोनम वांगचुक उसी लाइन पे काम करते हुए फिर उन्होंने आइस स्तूपा बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वहीं से सीखा। तो मित्रों, ये थी थोड़ा सा कहानी 2 वैज्ञानिकों की जो पर्यावरण के लिए यहाँ पे बहुत सीरियस काम कर रहे हैं, उनसे मेरी आज भेंट होने वाली है। धन्यवाद। Glaciers started. So then one of the scientists gave me your that presentation. So what a marvelous job you have done. Great man. Really.
इस दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम हैं. I think you are at the age of 90s? 89. 89. See? Papa Noel. Yes. I'm old man. I'm an old man. Great God. So you God. come from which? I'm coming from Uttarakhand. Uttarakhand. Yeah. Oh, I see. Dehradun. Yes, You might have heard. Yeah. Yeah, it's see, again, tourist destination, Mussoorie. Yeah. Huh? So when you came there? We came here on 21st. Then we went to the Nubra. Nubra Yeah. and then Pangung So. You come up? Yeah. And then Lamayuru also I visited. Yeah. So these are some of the important places where you have to see. Being a student of geology, I am a student of geology. She is my wife. Huh? So I asked her that once I am here, I have to touch the feet of the person. Really, you did a marvelous job. So tell me something about your stories, please. Yeah, please. You guys still put it I will take. Simply done. Thank you. So no, it's what happened here, you know. Huh. In the earlier days, we are having a very heavy snowfall. Yeah. During those days, what happened that our glacier used to be expanding year by year. Hmm. But what happened for the last, say, about 4-5 decades? Because of less snowfall, on the other hand, global warming, Yeah. our glacier receding very Rapidly. Rapidly. Huh. We are totally dependent on the glacier water, you know. All the Yes, we know. The entire valley, I have already seen. particularly that, you know, Himachal region. Yes. They are simply depend on glacier. Glacier water. Now what happened? You know, I was working in a rural development. I know. That you know. You in the JNK government. Yeah. Hmm. So during those, I had to visit each and every village, whole the district, you know. Huh. So wherever there is a source is available, Hmm. I've done, for example, that constructing new irrigation channels Hmm. and remodeling the existing Yes, whatever yes. that's, you know, that I've Basic done. exercise. All these things I've done, you know. Huh. So what happened one day? I have visit to some village, you know. There one village in one. There is 5 villages in one valley. Hmm. So they are facing a lot of problem for the water. You know. Oh. Then I see, I seen everything. I went to their glacier sites. Hmm. I found there's very less. There's no much glacier, you know. So particularly what happened, you know. Our sowing season starts in the month of April, May. April, May. Okay. Isn't it? Sowing season, yeah. So that is the more crucial period. Yeah, the climax. Yeah. The water is required. Actually, what happened because of the rapid melting of glaciers, Uh-huh. our glacier is way up. Now you can see only white spot on the peak. Top only. Oh, Just cap. Yeah, Snow cap. yeah. But in the earlier days, what happened? The half of the mountain used to be covered with the glacier. Oh. For example, you can see this stock. Stock village. Now only On the top. On the top. Yeah. All this is glaciers. Hmm. finished. I had been there. I went there. You've been there. Yeah. I know the king of that, Oh, see, yeah. Jigme Namgyal. Yeah. Yes. So then I had no idea how can solve this problem, you know. So one day
then I have to think day and night, you know. Oh, great. Great So thing. then one day I got some idea, you know. Yeah. Actually, what happened? Suddenly. We had a long winter, you know, here. Correct. During winter, we can't go any crop. Anywhere, yeah. Any crop, you know. Only I think 3 months or 4 months you have. Yeah. No, 6 months we can't go anything. Okay. After October till March, we can't go anything, you know. So what happened? Whatever water available in the mainstream, you know, it may goes west in Indus, you know. Directly. Then I thought I will conserve this waste water in the form of ice. Yeah. It can be to some. It will be an some asset. extent it can At be least for few months. Yeah. Particularly in swing season. Swing season. Actually, what we are doing, we are constructing artificial as far as possible near the village, you know. So that the altitude begins the natural glacier, artificial glaciers. It may be about 6,000 to 7,000 feet. Right. Below. Yeah. It's being a low altitude. It melts early in the spring. Yeah. At the exact time of it will not sustain much. Yeah. It will last hardly 1.5 months. You know? Oh. Yeah. It supplements during swing period. You know? That is the only thing. Yeah, that solves the purpose. Actually, basic purpose is to show that you want, you know, that period. Yeah, the peak hours you need that water. You know? Exactly. That's the beauty. Then after say nowadays the water is coming from a lot of water coming from different sources. Yes. From the English, you know. In the early spring, we are having very less water in this. You know. This is the main problem. And then I think this fellow who is doing nowadays the Sonamangtu. Yeah. I spy he's making. This is also in the same way, you see. He follow your line. So you are the guru for him. Huh? Yeah, he make some remote work of that. Good. No, he's doing right. He's also doing good. Yeah, we appreciate his task. Have you been there, you know? Huh? Have you been to? No, unfortunately I couldn't. That's because we have some other team members also. I have now 2-3 members with me. Mm-hmm. So we said that we have to go into different places. So couldn't get time from him. I see. Though he came to Dehradun last month. Some land problem is also there. So he's now, some politically motivated people are also involved in that. Yeah, he's doing a very good job. But I was seriously thinking that once I'll go there, I'll touch your feet. So you are great gurus. I'm a student of geology, teaching last 35 years to the students. And every slide I'm telling them, no, there is an answer. We have an answer. And answer is this. Norfel, the great man. Thank you. Actually, it is a very